Okay, so let's start the class. That is, today we will discuss about work, energy, and power. One by one, we will complete the topic, and after completion of the topic, you will have some more questions to discuss about this chapter. And this chapter, actually, making this video just because of you have uh, less time for your half yearly examination, so you can study your entire syllabus that is coming in your half yearly examination. एंड आई होप कि सभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो वो सही ढंग से कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि तभी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. दैट इज लेक्चर 1, वर्क. Initially, we will discuss about the definition of work done. What is actually work is done? There are many definitions present you have, but the very basic and important definition that is in front of you is work is said to be done when a force is applied on a body, and just because of application of that force, if there is some significant displacement in the object. For example, this is an object, let's suppose, and we have applied a force on this object. We all know, we have already studied in last lecture, that if you will apply a force on a body, the body will move. It will change its position, and due to change in its position, there will be a significant displacement into this. This is what the displacement. So basically, the work is said to be done when there is a force is applied and also there is some displacement. Okay, so the very basic definition of work done that we can say, work is said to be done when a force is applied or acting on it and there is a significant displacement. Now, अगर हम बात करते हैं वर्क डन के एग्जैक्ट फॉर्मूले की कि व्हाट इज द वर्क डन इन मैथमेटिकल टर्म, सो वी कैन से द वर्क डन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के बीच का अगर डायरेक्शन में कोई डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल if a force is applied into this direction and the displacement is actually in horizontal direction at some angle theta, so what we have to take, you have to take the force and the component of this displacement in the direction of force, or the second definition says this is the displacement and this is the direction of force applied and this is the angle theta. You can take the force in the direction of displacement, means you can take the component of this force in the direction of displacement, that will be what, f cos theta, and into the displacement. Similarly, f into s का यहाँ पर ले सकते हो s cos theta. So in both of the ways we can define the force. So simply here a force F is applied on the body and this has a direction theta with the direction of displacement. This is the direction of displacement. So displaced direction of the body is horizontal while it is making some angle theta. So simply we can say the work done W is equals to what, F into S cos theta, or you can say F cos theta into S, or simply we can say W is equals to F S cos theta. ठीक है. अब यहाँ पर जो हमने ये फोर्स की बात करी, this force is actually just because of this work done is just because of applied force F. Now यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, द वेक्टर F is there and there is a displacement vector, and if we will multiply them like F dot S, so we will get Fs cos theta. It means Fs cos theta is nothing but the work done. So simply we can say work done W is nothing but the dot product of two vectors F and S. Okay, and if we have any constant force, so we can simply say if F and S are the vector, so the work done is the dot product of the two vectors. Okay, now चूंकि हमें पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, hence we can say the work done is a scalar quantity. Okay, and if we will talk about its unit, so unit of the work done is nothing but its joule. Okay, और अगर आपको बात किया जाए क्या कि how will you define 1 joule, so 1 joule is nothing but 1 Newton into meter. So this is what 1 joule definition. तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी क्या कि अगर हमारे पास
किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट, सो देयर विल बी अ वर्क डन, and that work done can be calculated with a basic formula that is F dot S, that is Fs cos theta. तो और remember this formula always. ठीक है. Now let's have some questions related to this. But before the taking questions, we will also talk about this, a very important note, that work done could be positive, negative or zero. How? See, W is equals to Fs cos theta. Okay. Now, this theta, that is actually matter. How? Let's see. The work done could be positive, work done could be negative, and it could be zero as well on the basis of theta. If theta is equal to 0 degree, means this is the object and the force is applied in this direction while the displacement is also in the same direction. So the angle between these two vectors, force and displacement, is nothing but 0. In this condition, if we will get the value of force, that is Fs cos 0. So this is nothing but the maximum work done, that is F into S. Okay, so this is also called maximum पॉजिटिव वर्क डन. तुमने कहा सर ये तो मैंने बचपन में पढ़ा था, लेकिन यहां पर क्या हम कुछ और ब्रॉड डिस्कशन कर सकते हैं? तो यस, सी, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर एंगल लेस देन 90 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब एक्यूट एंगल के लिए ये वैल्यू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है. सी, आई एम गिविंग यू हियर अ कॉन्सेप्ट. तुम सभी लोगों को पता होगा बेटा कि आपको यहाँ पर दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन दिस क्वाड्रेंट फ्रॉम एंगल 0 to 90 degree the cos theta is actually positive. Even all the trigonometrical ratios are positive here. While the cos theta in this case, that is negative, means the angle greater than 90 degree and less than or equal to 180 degree. So this is the 180 degree axis, this is 0 degree axis, this is the 90 degree axis. So from this concept we can say work done can be negative when theta lies between 90 से बड़ा हो गया and 180 तक. ठीक है. So this work done will be negative. Why? Because cos theta is negative here. So we can calculate the value of work done for 180 degree angle. So Fs cos theta इस जगह हमने रख दिया 180 degree. So we have a work done, that is Fs into -1, that is minus of Fs. This is also called the negative work done. और नेगेटिव में अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू है इस वर्क डन की. While if you will take about the zero work done as well, and we will take some example in which you will got to know about the negative as well as positive work done. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी एंड this is a frictionful surface. Its friction coefficient, let's suppose 0.3. You have applied a force of 50 Newton, and the mass of the body is actually how much? Let's suppose 40 kg. Okay. Now, its weight, that is mg, will act in this direction, and due to this weight mg, you can say, sir, it has 400 Newton weight. Okay. What must be the reaction, normal reaction force? R. So R must be equals to what? Mg. So we can calculate the friction force as well. So mu into R, that is 0.3 into how much? That is 400. So क्या हो गया? 120 Newton. Means the maximum value of friction that could be how much? It is 120 Newton. So the question here is whether this object will move or not. The friction force of static value is 120 while you are applying a force of 150 Newton. In this case, the body is not moving. Hence, we can say there is a force applied, no doubt, but there is no displacement. Hence, when there is no displacement, that is also the case of zero work done. Means the displacement is zero. So work done will be what? Also zero. This is the first case. Okay. Now, in the second case, if I ask
If I ask, we have to calculate the work done by force F. If the value of F is 200 Newton and body moves for 10 meter. In the same example I am taking, हमने क्या बोल दिया, force कितना लग गया 200 Newton. When this force becomes 200 Newton, definitely the forward force is greater than 120 degree. The body will start moving. और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, while the friction will act here. For some instant or for this example, we are taking Fs is equals to Fk right now. Okay, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन, बैकवर्ड फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बेटा, इट इज 120 न्यूटन राइट नाउ, एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन दैट इज 10 मीटर. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज F into S cos 180 degree. There is 180 degree between the displacement and the friction force. So that will be a negative work done. है ना, तो -1 मल्टीप्लाई होगा, फ्रिक्शन कितना हो गया 120, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10. सो वी कैन से दिस इज नथिंग बट -1200 जूल ऑफ वर्क डन. बट अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फॉरवर्ड फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, so the value of that will be 200 into 10, because both are in same direction. This is the case of positive work done and maximum positive work done actually. So that will become how much, 2000 joule. Okay, so this is the very basic concept. But in case इसी क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं क्या कि अगर मैं तुमसे पूछूं what is the work done by this normal reaction force. Okay, so what will you say, sir? The normal reaction force is acting actually in this direction while the displacement is in this direction, hence the angle is how much, 90 degree. And if the angle is 90 degree, you can say the work done W is equals to Fs cos 90, and we already know the value of cos 90 is 0. Hence, we can say the work done is 0. So, I hope you understood what is the positive, negative, or zero work done. We will also discuss about all the same topics. Okay, here one example I have given from the NCERT. क्या? This is very important example. कह रहा है क्या? A cyclist come to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. How much work does the road on the cycle? This is very important part. The road on the cycle, and how much work does the cycle on the road? There are two questions. Let's discuss about these questions. Question. Here is a cyclist. Okay. Let's suppose this is a cyclist and it is actually moving. Now when he applies a brake, the cycle starts skidding. और ये जो साइकिल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर का डिस्टेंस मूव करता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन हैज गिवन द रोड अप्लाइड a force of how much, 200 Newton on the cycle. So force on the cycle due to road, if we say that is 200 Newton. और ये जो फोर्स है एक्चुअल में ये फोर्स क्या कर रहा है, इस मोशन का अपोज कर रहा है. मींस द फोर्स इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, FCR. If this is an action force, if we assume this, so cyclist must have applied a force on the road as well, but the direction of that force will be in opposite this direction. The force applied by cyclist on the road due to cyclist. Force on the road due to cyclist. It is in this direction. Okay. Now, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो कह रहा है क्या, वर्क डन बाय what, road on cycle, means W is equals to F CR into displacement into cos 180 degree, because both are in opposite direction. See this and this. So definitely this work done will be negative and you may calculate this answer. कैसे हो जाएगा देखो, अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, that is how much, 200, S है 10 मीटर और into -1.
That will be minus 2000 Newton. Sorry, Newton meter. Okay. But the question number second, what it is asking, work done by work done by whom? Cyclist on the road. So that work done is equals to force applied by cyclist on the road into displacement in the road into cos theta, you can say. So how much displacement has been done on the road? रोड शिफ्ट हुआ है क्या कहीं पर? नो. So displacement is zero, hence we can say the work done is zero. So work done by cyclist on the road will become zero. I think आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है बेटा, देख अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जस्ट बैक करो और फिर से दोबारा देखो, तुम्हें आराम से समझ में आएगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज we are going to take some example, and now still we are discussing about the force which is acting on the body. It is not changing, means it is a constant force that we have applied here. So always keep in mind, we have to discuss the work done by the constant force. Let's take example number one. कह रहा क्या, a force of 200 Newton acting on a body at an angle 37 degree from the horizontal. मतलब केवल इतना हमें पढ़ना है, अगर इतना पढ़ते हैं तो क्या होगा, देखो सी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन is applied on the body from the making an angle 37 degree from the horizontal. Okay, and there is a displacement in horizontal direction. ठीक है, there is a displacement in the horizontal direction. यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर लो, by let's suppose 10 meter. Okay, calculate the work done. So this body is actually displacing from this position to some new position, and this displacement is actually 10 meter. Okay, so here the force is given, displacement is given, और आपके पास क्या है, एंगल भी गिवन है. सिंपल वर्क डन इज इक्वल टू क्या करोगे, एफ एस कॉस थीटा. एफ हैज अ वैल्यू 200, एस की वैल्यू कितनी होगी 10, कॉस 37. जब भी आपके पास 37 या 53 डिग्री आए, आपको ये ट्रायंगल याद रखना है. क्या, इफ दिस एंगल इज 37, दिस मस्ट बी 53, और 37 के सामने वाला साइड सबसे छोटा 3, देन दिस इज 4, दिस इज 5. For cos 37, this is base and this is hypotenuse. You can put the value, that is 200 into 10 into 4 upon 5. 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8 दूनी 16, 1600 joule of work is done here. Okay, now this is what a very simple question जो मुझे इस लेक्चर में नहीं देना चाहिए था, बट स्टिल आपको जानकारी के लिए ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है. The second question that we can take here, a force of F, it is given here. The value of force is given, the work done we have to calculate, that is 2I cap plus 4j cap plus 10k cap. This is the work force acting on a body so that it displaced from this position to this position. Means, what is the initial position? You will say, sir, our initial is 2I cap plus 5j cap or plus 9k cap. Remember this, how you will find the position. Here, the displacement is not given directly. So you have to find out displacement first. For this, you have given a position, that is 11I cap minus 6j cap or minus 8k cap. Okay. So what must be the value of displacement? Displacement is equals to final position minus initial position. Means you have to subtract from second vector to the first vector. What will you get? Sir, 9I cap. इसमें से इसे अगर आप माइनस करोगे, I से I माइनस हुआ, J से J माइनस हुआ, तो क्या हो जाएगा, माइनस 11J cap. Now minus 17K cap. Now we have displacement as well as force vector. Okay. Whenever you have given a force and displacement in vector form, so you have to calculate the work done by multiplying them with a scalar product or dot product, F dot S. How will we multiply? Simple, 2I cap plus 4J cap
plus 10k cap dot 9I cap minus 11j cap minus 17k cap. Now I will multiply with I only, j will multiply with j और k will multiply with k. Why? ये आपको पहले से पता है. इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये चीज नहीं समझ में आया. डेफिनेटली आई विल give some solution. Okay, 9 into 2, that is 18 I dot I, minus 11 into 4, that is 44 J dot J, and 17 into 10, that is minus 170 K dot K. Now we know that I dot I, J dot J, K dot K will become 1. Hence 18 minus 44 minus 170, एंड कैलकुलेट अगर इसे आप करना है तो आप कर लो. तो कितना हो जाएगा बेटा? 214 और 196 I guess. So this will be the value that is in joule. So this is the answer. This is how you can calculate the value of work done. तो देखो बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको या तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसके बारे में हम आगे स्लाइड में बात करते हैं. तो यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई. पॉज करो, एक बार जरूर इसको देखो, फिर आगे बढ़ना. नाउ लेट्स टेक सम रियल लाइफ फोर्सेस जो कि हम लोगों ने पढ़ रखे हैं और उनके थ्रू वर्क डन कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो सम एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट वर्क डन. जैसे अगर हम बात करते हैं क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी, और एक चीज यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, बिकॉज जब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर थोड़ा वेरिएशन आएगा. बट नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, व्हाई समझते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द अर्थ सरफेस एंड दिस इज एनी ऑब्जेक्ट एट दिस हाइट. लेट्स सपोज दिस हाइट h. इट इज नॉट मच हाइट. मतलब कैसे? जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी हाइट होनी चाहिए ये, उसके लिए हम बात करते हैं. तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से. दैट इज हाउ मच? m into g. एंड द वैल्यू ऑफ g एक्चुअली वेरीज विद द हाइट. हाइट अगर आप बढ़ाते हैं बेटा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है. तो दिस वेरिएशन दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 8, that is gravitation. So don't worry about this. We are talking about what? The for smaller heights. Smaller height means 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer. That is not an issue. यहाँ तक भी आपका ये उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. बट हाँ, बहुत ज्यादा करेंगे बिकॉज द रेडियस ऑफ अर्थ दैट वी ऑलरेडी नो 6400 किलोमीटर है ना. और नियर अर्थ जहाँ तक की बात है हम लोग मानते हैं लगभग लगभग 1500 किलोमीटर. तो डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है, इसमें ग्रेविटी में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आता है. नाउ इफ वी ड्रॉप दिस ऑब्जेक्ट हियर, ओके, और अगर हम इसे ड्रॉप कर देते हैं तो द बॉडी विल फ्री फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड व्हेन इट विल फ्री फॉल, it will fall through a distance of h. Okay, so what is the direction of displacement? Vertically downward. What is the direction of force? Vertically downward. Hence we can say work done by the gravitational force, that is equals to force यानी कि mg into displacement यानी कि h. दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. So we can say the work done is actually mgh, and it is actually positive. Hence we can say the work done by the gravity during free fall is positive. But we can take another example. If this ball has to thrown vertically upward, हमें इसको क्या करना है बेटा? वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रो करना है. और फॉर एग्जाम्पल इसको थ्रो करने से ये किस हाइट तक जा रहा है? h. आपको पता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी तो भी आप कैलकुलेट कर लोगे. ऐसे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, बट इन दैट सिनेरियो this force mg is actually acting in downward direction. It is constant. Its direction is not going to change. Its magnitude is not going to change. But the displacement and direction both has an angle 180 degree. Hence we can say the work done in this case, that is mg h cos 180, that is minus work done. So during upward motion the work done will be negative. During downward motion the work done will be positive. ओके, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो हमने स्पेशल एग्जांपल यहाँ पर लिया है,
इस एग्जाम्पल को अगर जरा ध्यान से देखो, सी दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक, ओके, this block, and we know that for this block there are many forces, but actually we have to focus on what, that is mg. किस पर फोकस करना है बेटा, mg पर फोकस करना है. So direction of mg is what, vertically downward, okay. It is initially at some height, let's suppose y1, okay, and finally it reaches at height yf, y initial to y final. What is the vertical displacement, that is h? What is the horizontal displacement, that is s? तो आपसे अगर मैं पूछूं कि what is the value of work done, ठीक है, तो इन सिंपल इन जनरल हम सभी लोग जानते हैं क्या, कि अगर ये फोर्स आपका mg है एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला ये जो एंगल है वो एंगल कितना होगा बेटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज मेकिंग एंगल थीटा हियर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा. ध्यान से समझना, फोर्स कहां पर लग रहा है बेटा, mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है. अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो कितना रहा है, हमने कह दिया भाई डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर हो रहा है इस डायरेक्शन में वो कितना हो रहा है, s डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके. नाउ अब डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर s हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इन दिस केस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स into displacement into cos angle between the force and displacement, or we can say mg s sin theta, ठीक है, और s sin theta, okay, s sin theta very important is this, see this is the value of s, this angle is how much, theta, ओके. तो s का अगर कंपोनेंट लिया जाए तो ये क्या मिल जाएगा, s sin थीटा, एंड दिस s sin थीटा इज नथिंग बट द वर्टिकल हाइट, ओके. तो वी कैन से दैट इज mg into h, और mg y फाइनल और y इनिशियल minus y final, or we can write here that is mg y final minus y initial. So this we can write, the work done by the gravity is again here, it is not depending the horizontal value, it is actually depending its initial and final position. इस पर डिपेंड कर रहा है बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, और इसकी वर्टिकल हाइट मैटर करती है. तो ये बात बस आपको यहाँ पर याद रखनी है. तो इससे हमारे पास कुछ कंक्लूजन निकल के आता है. द फर्स्ट कंक्लूजन इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, एंड दैट इज द रीजन जितने भी फोर्सेस होंगे जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. क्या कहलाता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स. मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा बिकॉज अगर आपके यहाँ एमसीक्यू प्रॉब्लम आ रहा है आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स. You will have the answers, you will have the options, and you have to understand the conservative force means which is actually not depending on the path, whose work done is not depending on the path. So final vertical coordinates पर डिपेंड करता है, not on the path. तो ये चीज आपको क्लियर रखना है. तो हमेशा याद रखेंगे क्या, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स. द सेकेंड पॉइंट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो for any path that returns to its initial position. That is also an important line. How? I'll show you. For example, हमने कहा क्या कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, इसको आपने फ्री फॉल कराया, ठीक है, किसके अंदर, mg के अंदर. mg इसको लेकर कहां पर आया बेटा, यहां तक लेकर आया, ठीक. दिस इज द इनिशियल पोजीशन ए से कहां पहुंच गया, बी पहुंच गया. आपने कितना वर्क डन किया फ्रॉम ए टू बी, सर द वर्क डन इज mgh. Very good. Now we again want to send this object from B to A position. कहां पर पहुंचाना चाहते हैं, B to A position. Let's draw separately. B से हम कहां पहुंचा रहे हैं बेटा, A पहुंचा रहे हैं. In this condition
what is the work done from B to A, you will get, sir, minus mgh. But if I say what is the net work done, total work done, तो work done कैसी quantity है बेटा, scalar quantity. So in case of scalar quantity we can say VAB plus WBA, दोनों को अगर हम ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा, mgh minus mgh, you will get a zero work done. मतलब ऐसा क्यों हुआ? दूसरा अप्रोच आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, यहां आया, फिर वापस वहीं पर चला गया, मींस व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, हेंस वी कैन से वर्क डन इज जीरो. ठीक है, इसीलिए हम वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इज फॉलोड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, सी, एक, दो, तीन. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मैं बता देता हूं. ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, रिमेंबर दिस. ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई. So we have done with the example that is work done by gravity. तो रिमेंबर, याद रखना है क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी जब हम लोग फ्री फॉल कराएंगे, पॉजिटिव ऊपर की तरफ सेंड करेंगे, नेगेटिव. यहाँ पर अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी मूव भी कर रही है तो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि हमने आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में बताई थी, वो डेफिनेशन क्या थी कि आपको जब भी किस बात करनी हो, किसके बारे में बात करनी हो बेटा, वर्क डन के बारे में बात करनी हो, तो आपके लिए जरूरी क्या चीज है वर्क डन के बारे में बात करते टाइम, द फोर्स that is vertically downward and displacement in that downward direction only. Force multiplied by the displacement in the direction of force. Okay, so I think it is done. Now we can take some more example. Although friction is not a conservative force, but we are talking about the constant force here ना. तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स के बारे में, तो आपके सामने कुछ पिक्चर क्लियर होगा. सी द एग्जाम्पल नंबर वन, द डायग्राम वन. यहां पर आपको क्या हो रहा है भाई, आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. व्हाई? बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था हियर, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स. यहां पर क्या है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है एफ अप्लाइड से, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नो. तो हियर इज नो वर्क डन बाय दिस फोर्स एज वेल एज दिस फोर्स. यहाँ पर लिखा हुआ क्या, when the block is pulled by a force F and the block does not move, the work done by the friction will be zero. Again, in the second case, if we have applied a force F and there is a displacement in the direction of applied force, in this case, the friction is acting actually in backward direction. But in this case, static friction has less value than applied force. ठीक है, तो जब फोर्स अप्लाइड है और बॉडी मूव कर रही है, तो ऐसे केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कैसा वर्क डन करेगा भाई, नेगेटिव वर्क डन करेगा. व्हाई? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन व्हाइल द फ्रिक्शन फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, फाइन. नाउ लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल. इन थर्ड एग्जांपल, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. इन थर्ड एग्जांपल, व्हेन देयर इज अ ब्लॉक ओवर अ ब्लॉक, बी ब्लॉक के ऊपर कौन है, ब्लॉक ए है, and you are actually applying the force on block A. Okay, there is a friction present in between the surface of the blocks. Okay, ऐसे कंडीशन में होगा क्या, जब आप इस बॉडी को आगे की तरफ अप्लाई करेंगे फोर्स F, तो when a force F is applied in forward direction, body A or block A will have a tendency to move in forward direction. Body A की टेंडेंसी ध्यान से समझना, it has a moving tendency in what direction, मूविंग टेंडेंसी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. ओके, तो इफ दिस फ्रिक्शन which is acting on A due to B and A contact, this is in backward direction, so this could be considered as the action force. So definitely A will apply a reaction force on B and that friction will act in the forward direction, because अगर ये backward है तो ये forward है. तो यहाँ पर ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम दिया गया है. अगर आप देखिए तो ए पर फॉरवर्ड फोर्स कौन लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जबकि यही फ्रिक्शन के बराबर यहाँ पर एक फ्रिक्शन और है जो बॉडी बी को आगे की तरफ मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स
ऑन ए, जब ऑन ए की बात करेंगे तो क्या होगा, ए इज डिस्प्लेसिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव. But if I ask work done by the friction force on B, that will be what, positive. Why? The friction force is responsible for the motion, both are in same direction. So the third point is written here. I hope you are getting my point. Okay, now let's take a very good example here. Work done by tension. In case of टेंशन फोर्स आपके सामने आ जाता है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे वर्क डन? जैसे कह रहा है क्या, अ लोड ऑफ मास 3000 kg is lifted by a winch with an acceleration a is equals to 2 meter per second square. Find the work done during the first 15 seconds from the beginning of the motion. Okay, suppose this is the body. Okay, a force is applied by a string. Let's suppose यहाँ winch word इस्तेमाल किया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Now this force T is responsible to move this object in upward direction, but this object must have a weight in downward direction. But still कह रहा है क्या, it is moving with an acceleration a in upward direction, है ना? This is the condition. In this case, we can apply the Newton's second law. The upward force is T, the downward force is mg, but still the whole body is moving with an acceleration a. This is the equation number 1. So we can say T must have a value that is m g plus a. इधर हमने ट्रांसफर कर लिया. अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो. m कितना दिया हुआ है, इट इज 3000. g की वैल्यू लेट सपोज 10, a की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 36000 न्यूटन ऑफ टेंशन इज एक्टिंग एक्चुअली. ठीक है ना, चूंकि ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, मोशन करेगा, है ना? तो व्हाट इज the displacement in this body if it is moving with an acceleration of 2 meters per second square in how much time, 15 seconds. So the initial velocity, let's suppose 0, the acceleration in upward direction 2 meters per second square, and the time is given, that is 15 seconds. You have to calculate the displacement. What must be the value of displacement? Sir, it is half AT square. क्यों? UT तो 0 हो जाएगा ना बेटा, UT plus half AT square फॉर्मूला लगाएंगे. So the value of S, that is half, A has a value that is 2, T has a value that is 15 ka square. So you can say it is 225 meter. Okay. So we have the displacement, we have the tension, and the direction of tension and displacement both are in same. Hence we can say the work done is tension force into the displacement. That is, tension है कितना, 36000 multiplied by 225. So the value of W, you can multiply 225 by 36. Okay, 65 3 3 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, दिस 0018. ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 8100 और 3 जीरो ऑलरेडी था, 1 2 3. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जूल, और यू कैन से W is equals to 8100 kilojoule as well, or you can say W is equals to 8.1 megajoule as well. So you may have different answers, so don't forget to convert these units. I think you're getting my point. So these are the some examples of constant force which are actually acting on a body, and due to these forces there are some displacement, and when there is a force there is a displacement, you will get some work done. Okay, moving on. So we have discussed about, till now we have discussed about the force, that is a constant force which is acting on a body and there is a work done. But in case if you have a force which is depending on the displacement, which is actually depending on the displacement. For example,
If we are taking a force F, let's suppose S, or let's take a very another good example. We have a force F, okay, that is a vector quantity, which is a function of R. What is the meaning of this? Means फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पर डिपेंड कर रहा है. कैसे? देखो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस फोर्स इन वाई डायरेक्शन जे कैप प्लस फोर्स इन जेड डायरेक्शन के कैप. ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट एस, let's suppose a very small displacement dx in I cap, dy in j cap, or dz in k cap. Okay. Now अगर मैं पूछूं कि what is the value of work done, तो you will say sir F dot S. ठीक है. चूंकि Fx is the function of x, Fy is the function of y, Fz is the function of z. क्या होता है मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आराम से समझ में आएगा. थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे. अगर मैं कहता हूं क्या कि यहाँ पर जो वर्क डन है W, इन दोनों को का डॉट प्रोडक्ट होगा F डॉट S. बट दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सपोज ds. द वर्क डन विल आल्सो बी स्मॉल, दैट इज ds. यहाँ पर ds, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या? Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz. This is a broader concept, DW. But if we want to find out the total work done, so can we do? We can integrate. This will give you the total work done from, let's suppose, position A to position B. Means A का मतलब क्या हो गया? It has, let's suppose, x1, y1, z1 position. B का position क्या हो गया? x2, y2 and z2 position. तो ये क्या हो जाएगा? Integration of fx dx from x1 to x2 plus fy dy. Y will vary from y1 to y2, while fz dz, this will vary from z1 to z2. So this is what the work done by the force acting in x direction, force acting in y direction, or force acting in z direction. ठीक है. So this is a broader concept, means 3D concept. बट इन जनरल अगर आपको कभी भी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कहीं भी निकालना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली उस फोर्स को एस के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए और फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन क्या कर लीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. जैसे एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल, इफ अ फोर्स एफ इज डिपेंडिंग ऑन एक्स लाइक -200 एक्स स्क्वायर. ओके, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? एक्स पर डिपेंड कर रहा है. मतलब केवल और केवल मैं वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो व्हाट इज द वर्क डन? फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम x is equals to -1 to x is equals to +4, लेट्स सपोज. तो हमारा वर्क डन कैसे निकल आएगा बेटा? F डॉट dx, क्योंकि x और x दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सेम आ जाएगा. f की जगह क्या लिखोगे आप? -200 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. एक्स इनिशियल -1 और कहाँ तक? +4. 200 माइनस में है तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो -200. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3. यू विल पुट द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट. -200, when you will put the upper limit here, तो क्या करोगे? 4 का क्यूब, that is 64 by 3, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 का क्यूब 1 by 3. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ W हैज अ वर्क डन दैट इज -200 इंटू, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3. ये हो जाएगा 65 by 3, दैट इज माइनस 65 का 2 कितना हो जाएगा? 130 और 20 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई 3. दिस मच अमाउंट ऑफ जूल वर्क. Are you getting this? So whenever you have any like
any variable force. So you may calculate the work done by this method. Okay, let's take another example. That is the live example, work done by the spring force. किसकी वजह से बेटा? स्प्रिंग फोर्स की वजह से. How? Let's suppose we have a spring. This is called spring. And this spring is in its natural length. मतलब क्या हुआ? We have neither stretched और compressed. ठीक है, बट ये रेजिड सपोर्ट था. इसी का मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं. बट इफ दिस string has applied a force, some external force. Okay, let's suppose this is a mass m is also connected with this. So this will what? Is stretched by some distance. Suppose यहां से इसका stretch कितना हुआ है? x हुआ है. In this condition, the spring force will come into action, which will oppose the external force. So this is the external force. So there will be another force that is called friction force. That is called spring force that will come into action. That is minus of k into x. Okay. आप कहां से कहां तक ले जाना चाहते हैं? मान लो x1 से कहां तक लेकर जाना चाहते हो बेटा? x2 तक आप इसे स्ट्रेच करना चाहते हैं. ठीक है, तो आपको को यहाँ पर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स, यू विल से सर इट इज माइनस ऑफ के एक्स. वाई माइनस? बिकॉज एक्स अगर पॉजिटिव है तो के एक्स क्या होगा? नेगेटिव. दिस इज व्हाट हुआ. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन ऑपोजिट टू द एक्स. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज एक्स राइट नाउ. Okay, or we can say for a small displacement dx we can say. So that is the work done is equals to fs into dx. और कहाँ से? x initial to x final. You can put the value here, that is minus of kx dx from x initial to x final, और the value of work done that is minus of k बाहर आ गया, x square by 2 that is x initial to x final, or work done is equals to minus of half k x final square minus x initial square. This is what the work done by the spring force. ठीक है, बोलो बात समझ में आ गया ये चीज? तो इतनी बातें क्या हो गई? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. नाउ further we will discuss about the energy stored in the spring force, but not now. So this is how we can calculate the spring work done. Even if you are compressing the spring, for example, this spring has been compressed by some length x. So in this case, the compression force means the external force will act in this direction. There will be the displacement in this direction, while this force kx is actually acting in opposite direction to the displacement. Okay. So this is how we can calculate the spring force as well. Now, the variable force was acting there, and that variable force has, let's suppose, some graph like this. Okay, then how will you get the value of work done with the help of graph? कौन सा ग्राफ बेटा? फोर्स जो कि x का फंक्शन है वर्सेस x का ग्राफ. ओके, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx. इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है एरिया अंडर fx कर्व. ठीक है, so we can calculate the work done is equals to area by calculating the area under fx curve. Okay, so this is how we can get the value of this. Means the total area here, the total area under this curve, कहाँ से कहाँ तक? From x initial to x final, that will give you the work done. Okay, now let's take the example that you will able to understand. See, NCERT example that I'm taking here again. A woman pushes a trunk or truck on the railway platform which has a rough surface. मतलब, see, this is the condition.
This is a railway platform, let's suppose, and here is a box or trunk which is pulled by a woman, means a force is applied by a woman. She applies a force of 100 Newton. How much force she has applied? 100 Newton. So, when this body is actually moving, definitely there must be some friction force, that is kinetic friction, will be acting in opposite direction. ठीक, over a distance of 10 मीटर, और यहाँ से इसे खींच के कहाँ पर लेकर जाती है बेटा? यहाँ पर a distance of 10 meter. Okay. Now, thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with the distance. Linearly का मतलब क्या हो गया? Directly proportional. So यहाँ पर अभी इसका फोर्स कितना लग रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? It is 100 Newton. But now this force is going to reduce linearly. ठीक, और रिड्यूस होते होते कहाँ तक पहुंचेगा बेटा? देखते हैं। कह रहा है क्या? द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। मतलब यहां से लेके टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया? 20 मीटर। ठीक, अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस 250 न्यूटन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहां तक रिड्यूस होगा? जब तक ये 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, और इससे ज्यादा वो रिड्यूस करेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी? रुक जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, क्योंकि 20 मीटर्स का कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब वो ये हो गया क्या, कि यहां पर जब रुकेगी बॉडी तो रुकेगी कब? सी, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस। कब रुकेगी? जब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि इससे कम होगा तो बॉडी क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा और रुक जाएगा। तो दिस इज द होल सिनेरियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ कितना है? 50 न्यूटन। कैसे आप ड्रॉ करोगे? देखो, दिस इज द ग्राफ। दिस इज अप्लाइड फोर्स बाय द वुमेन, और नेगेटिव फोर्स में कौन लगेगा? फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। हाउ मच फोर्स वाज एक्टिंग इनिशियली? सर इट इज 100 न्यूटन। अप टू व्हाट डिस्टेंस? सर अप टू 10 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. So it is a constant force which was acting initially up till this distance. Now, this force was gradually decreasing up till what distance? Sir, up till 20 meter. But this kinetic friction, or the friction acting in between them, it was initially 50 and it has remained 50 until unless the body is not stopped. So this friction force is actually constant throughout the motion. क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखो, तो इसको ऑपोजिट अगर चलो कि 50 न्यूटन लग रहा था, यहां तक पहुंचा तब तक तो ठीक था, लेकिन जब आपका अप्लाइड फोर्स क्या हो गया? इससे भी कम हो गया, तो क्या बॉडी मूव करेगी? नो, बिकॉज अप्लाइड फोर्स तो कम हो गया लेकिन रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ गया, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में चला गया। सो दिस इज द ग्राफ। और कह रहा क्या? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर द 20 मीटर. Now, if you have to calculate the work done, it means the work done by women is equals to the area under force of applied by women versus x graph. Means this whole area that you have to calculate. You can calculate by using trapezium formula. ठीक है? So that is what? Half of sum of parallel side into height. तो हाउ मेनी पैरेलल साइड्स आर देयर? 1 and 2. ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर ट्रेपेजियम है ये वाला पोर्शन, और ये आपका ऑलरेडी क्या है? इतना स्क्वायर वाला पोर्शन है, और प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों की चीजें हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है? 100, और ये कितना है बेटा? ओनली 50। तो 100 प्लस 50, ओके, मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट का मतलब इन दोनों के बीच का पैरेलल लेंथ के बीच की दूरी, दैट इज हाउ मच? 10 प्लस 10 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5, दैट इज 15
0 into 5 plus 1000, that is 1750 joule. This is the work done by the women. While the work done by the friction is, चूंकि देखो ये माइनस नेगेटिव में है तो दिस होल एरिया नेगेटिव में -50 into 20, that is -1000 Newton. Is that okay? So this is how we can calculate the work done by the women as well as the work done by the friction force. So for work done, this is we are done. We can conclude this, है ना? We can conclude this topic. But before conclusion, I have given you this. Just pause your screen and take the screenshot of this. There are basically 5 questions, and they all are very very good questions. They are all based on the same concept that I have told you before. So let's calculate the work done. So let's conclude the work done actually. So I have given you what? The work done. The work is said to be done when there is a force applied on the body. Okay, and the basic formula of work done is nothing but F dot S or Fs cos theta. This work done can be directly applied for the constant forces, while this formula can also be applied for variable forces with some integration, that is F dot dx, and from x initial to x final. This formula can also be used to get the value of work done from A to B by finding the area under fx curve. So this is all for today. In next lecture, I will continue the next topic, that is what? Kinetic energy, that is potential energy and mechanical energy. All the 3 topics that we will discuss. We will discuss the conservation of energy in various form of work done or various form of force like gravitational potential energy or gravitational mechanical energy, spring energy. These are the energies that we will discuss in the next lecture. For this, we are done. Okay, just pause the screen and get the questions to solve.